Okay, so let me share my screen. So that was statistics using the list. So now we are gonna go for loop or iteration through the list. Who's this guy? Who's this? Om Dixit. क्या नाम है इसका? Om. Om, haven't you filled the form? Om? Om, are you online? Om Dixit. Yes sir, yes sir. Haven't you filled the form बेटा? एक मैंने ग्रुप पे फॉर्म भेजा था. No sir, no sir. This is my first class sir. कब ज्वाइन हुआ तो ग्रुप में? सर अभी मैम ने दोपहर में किया था, आफ्टरनून टाइम. एक सेकेंड, ऐसा कब सुन लगा मैं यार इन्होंने. ओके, नो इश्यूज बच्चा. एक मैं देखो एक ग्रुप में ना फॉर्म का लिंक दोबारा भेज रहा हूँ, उसको फिल कर दियो बेटा. ओके सर. ठीक है. और अभी मैंने एक किसी को ज्वाइन कराया था अभी, ये किसी शायद मोहित गुप्ता था कोई. मोहित ऑनलाइन है बेटा? हाँ सर. बेटा तूने भी नहीं फॉर्म भरा? फिल किया था सर. किया था फिल? हाँ. नहीं मोहित तूने नहीं किया रे. मैं शेयर कर रहा हूँ. जिसने भी नहीं किया, जो जिसको भी ऐसे एक्सेस के लिए मैसेज डालना पड़ रहा है या फिर वो करना पड़ रहा है, वो लोग प्लीज़ ज़रा ये चीज़ करें. एक सेकंड यार, मैं ना डॉट पवन एक सेकंड रुको यार, इसको यूज करें. सेंड रिक्वेस्ट. ओके, ये कौन है? ये तो नहीं करूँगा मैं, ये wasn't it. Okay, so let's start. Yeah, here it is, iteration through the loop. Now what is the what do we mean by iteration through the loop? Just a second, okay, just what do we mean by iteration through the list? Let's say I want to print all these number out of the list. Amarjeet Singh. सर वीडियो नहीं एक्सेस हो रही. यश मिश्रा. यश मिश्रा, तुमने फॉर्म भरा था? फॉर्म भरा था. भरा था मिश्रा जी आपने. 2793 यही है तेरी मेल आईडी? यस सर. मैंने तो एक्सेस दिया है इस पे. चलो मैंने किया हुआ है. क्या बेटा? वो है स्क्रीनशॉट शेयर किया सर ग्रुप में. मैंने किया हुआ है वो रिस्पॉन्स. या तो तूने फिर लेट भरा होगा फॉर्म. हाँ लेट किया था. ओके ओके ओके, नो इश्यूज बेटा. मेरे को एक काम करो यार, तुम अपनी आईडीज बताओ. तेरे पास भी नहीं होगा फिर तो मोहित ये वाला. कल सर आपने ऐड तो किया था मोहित. किया तेरे को मैंने ऐड. और कोई है जिसके पास ये वाला एक्सेस नहीं है, इस वाली ये जुलाई बैच के जो वीडियोस का एक्सेस है? Is there anyone who doesn't have the access to the videos? सर मैं ओम दीक्षित सर. ओम, अच्छा तो आज ही ज्वाइन हुआ है. तेरा तो हो भी नहीं सकता. ओम मेल आईडी बोल बेटा, लिख के भेज, चैट पे लिख के भेज. ओके सर. ओके सर. ओके एक सेकेंड.
एक सेकेंड, पवन सेन ऑनलाइन लग गई है, आ गया नहीं आया, नहीं आया है। लक्की भरत कॉपी, यार एक तो ना ये लोगों को, और कौन था, ओम दीक्षित सर ही आ रहा है, दोबारा फिल कर रहा हूँ तब भी सी। एक सेकेंड इसको मैसेज, सर जो मेरी स्मॉल सारा मेरा मेल आईडी में सर सब कुछ स्मॉल है सर। बेटा उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। The hell, why my control? पवन लेट भरा था क्या फॉर्म बेटा? पवन वो सर मैंने जब ही भरा था सर, पहले दिन। नहीं रे, तूने पहले दिन तो नहीं भरा है, क्योंकि मैं खुद लेट था इस बार तुम लोगों की एंट्रीज करने में। तूने पहले दिन तो नहीं भरा था, देख पवन। चल कोई नहीं, तू एक काम कर, अब मेरे को अपनी मेल आईडी जल्दी से भेज, मैं तेरे को इसका एक्सेस बाद में दूंगा। अच्छा, जिन जिन लोगों को मैंने अभी ऐड किया है या मैंने कल ऐड किया था, डू वन थिंग, ग्रुप पे एक बार अपनी मेल आईडी डाल के छोड़ दो, मैं इस वाली क्लास का एक्सेस भी डायरेक्टली दे दूंगा, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अभी जिन जिन लोगों को ऐसा हुआ है कि उनको मतलब रिक्वेस्ट करना पड़ा एंटर करने के लिए, वो एक बार अपनी ग्रुप पे मेल आईडी मैसेज डाल दो, ठीक है? ये क्यों है? ओके, एक सेकंड रुको जरा। और कौन था? ओम दीक्षित। मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद, मतलब क्लास के बाद एक बार एक्सेस दे दूंगा बैठ के आराम से। नहीं भरत, आप तो आप और यश तो नॉर्मली क्लास एक्सेस कर पा रहे हो ना? यस सर। ठीक है, तो तुम्हें तो एक क्लास एक्सेस की तो नहीं है ज़रूरत। ये हो गया, ये हो गया। और कौन था जिसको क्लास में मैंने एंटर करने दिया, मतलब मेरे को क्लिक करना पड़ा था स्पेसिफिकली? मोहित, मेल आईडी भेज बेटा अपनी एक बार। ये वाली मेल आईडी मुझे याद है, कल मैंने मजाक बनाया था इसका। तुम लोगों को तीनों को मैं एक्सेस दे दूंगा अभी क्लास के बाद, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। तो आज का लेक्चर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझना। कोई चीज़ समझ ना आए, हैंड टू हैंड ख़त्म करना उसको, क्योंकि फॉर लूप बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ही ज़्यादा। हाँ जी ओम, यस सर। म्यूट कर खुद को, ठीक है? फॉर लूप बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना इस चीज़ को। तो एक बार में अच्छे समझने की कोशिश करेंगे, नहीं समझ आता हम 3 बार करेंगे, लेकिन आज के बाद कल से हमें फॉर लूप आना चाहिए। वी शुड नो हाउ टू इम्प्लीमेंट अ फॉर लूप, ओके? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज फॉर लूप? एनीवन? Guys, is there anyone who can tell me what is for loop?
तो कोई तो बोलो, गलत बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। सर किसी हाँ किसी जी। स्पेसिफिक स्टेटमेंट में अगर हमें लूप लूप एग्जीक्यूट करना है, उसको बार बार एग्जीक्यूट करना है एक स्टेटमेंट। हाँ जी, लूप को क्या मतलब, लूप तो जरा हमने डिफाइन कर दिया कि बार बार एग्जीक्यूट करने का मतलब होता है। फॉर लूप अलग क्या है? हाँ जी, बता बेटा। सर इट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। अरे इतना टेक्निकल नहीं रे, इतना टेक्निकल मैं नहीं तुम्हें पढ़ा था, तू और टेक्निकल बोल। ओके, जस्ट अ पीस ऑफ एडवाइस बच्चा, आंसर सही है। सेट ऑफ एक स्टेटमेंट वाली बात हम बोल सकते हैं उस तरीके से, लेकिन हम जब भी कभी कुछ बता रहे होते हैं किसी को, भी ट्राई टू गो इन अ नॉन टेक्निकल वे। ओके, so okay, try it again. For loop is used to loop or iterate when we have known total number of output needed. प्रार्थना, वेरी गुड सर। किसी एक कोड को बार बार लिखने के लिए हम लूप को यूज़ करते हैं, वेरी गुड। नहीं, आधा सही है ये लगा तपन। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट नहीं पवन बेटा, तपन सही आधा है, प्रार्थना एकदम सही है, इट्स प्रॉपर आंसर। ओके, सो guys, open your chat box. Prathna has written something, look into it, like just read it. And there are two things that are important here. First is loop or iterate, the second word is total number of outputs needed. Okay, if we know the total number of outputs that we need for the specific system, in that case we use for loop. If we don't know how much numbers we want to have, or we want to go for an infinite long loop, in that case we use a while loop. Okay, अगर हमें numbers पता है कितने हमें चाहिए तो हम for loop यूज करते हैं, नहीं तो हम while loop यूज करते हैं। ठीक है, ये चीज समझ आएगा इस? हाँ ना बोलो रे। यस सर। गुड, जस्ट अ सेकंड गाइस, मेरे ना ये पैड वाले पेन का एक छोटा सा पीस नीचे गिरा है। आई नीड टू फाइंड इट, बिकॉज अगर वो खो गया तो मेरा अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा, और मुझे वो मिल गया। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। Sorry guys. A loop execute, for loop execute the statement and program in several times repeatedly until the condition returns false. आयात गलत है ये चीज़, लाइक गलत नहीं है, लाइक आई शुडंट से गलत है, बट दिस इज स्पेसिफिकली फॉर योर while loop. Okay, in that case we use the false statement and all, but for your for loop we don't use it like that. I don't say it's wrong, it's not proper, because loops as such both are same, they work normally in the same fashion. We can use the while loop for a finite number also, we can use a for loop for an infinite number also, but there's a specific way to use this, and that's how we do. Okay, we need to okay, let me open a whiteboard once and I'll show it to you there.
Internet is like slow today. Okay. For loop. Okay, think it like this. I have to do a specific task 10 times. So for that I'm gonna use for loop. Okay, one condition is this: I have to do a task until a condition is met. So for something like that we use a while loop, in which we don't know how many times we have to run the task. For loop is a finite system, whereas a while loop is an infinite system. Okay, syntax of this for loop is normally this: for x in dash, like dash as in like it can be a range, it can be something iterative, or it can be a data storage unit like list, it can be a dictionary also. No, actually it cannot be a dictionary specifically, but it cannot be a dictionary, but something with a sequence. It can be a string, it can be a tuple, it can be a set. Sorry, it cannot be a set, my bad. Tuple, string, yeah, that's it. 4 things. Now I'll tell you what is range. Range is basically a numeric sequence. We can give it from 0 to anything, like let's say 100. In this case the output will be 0 to 99 printed out. Okay, always the higher limit is not met, it is met with -1 of the higher limit. So 0 to 99. For the range function specifically, the syntax is lower limit, higher limit, and we also have an option of step. Now what is step, sir? Let's say if I go for 2 here, my first my first element that will be there will be 0, second will be 2, third will be 4, 6, 8, and so on. If I go for 3 here, it will be 0, 3, 6, 9, and so on till 99. Okay, so this is how it works. Now list and string and tuple, we are going to use it like that, and then we are going to work upon it. Okay, so coming back to the syntax, what I said, for x in anything, x in these things. Okay, then we have to we have a colon here, and then now what is x? Let's say, okay, let's say I have a list. Actually I'll just copy the list that I have here. I have a list of this whole system, 96, 90, whatever the numbers I used yesterday. Okay, so let's say if I write, let's say this name list is x, no, not x, sorry, list. So for if I want to iterate it like that, for x in list, okay, semicolon, sorry, colon. Over here I don't write it like just below this, I write it with a tab, although it is done automatically by your Python interpreter or compiler, but still you need to take care of this, because all of the code I'm gonna write, it's gonna come under this for loop statement. So that's why we write it inside this block. Okay,
like this indenting, like we also do it in the bullets, like if you write something on MS Word with a normal bullet, and after that in the second line, like it's like a sub point kind of thing. Okay, so for the sub point part, or like second bullets, we use it like here. Okay, you'll know, you'll understand it when I'm gonna use it. Okay, now what is X? Apparently X is a temporary name given to the element we are using. Okay, so 1 2 we had 17 I guess here, I'm not sure, apparently 16, we had 16 elements here. Yeah, 16 elements. So we know, okay, just okay, we don't know anything yet. So for X in list, as soon as the X, like the loop entered in this list, the first element is 96. Okay, the first element is 96. So in this case, just as I said, it's a temporary one, so X is equal to 96. Now if I write print, although we don't write it, it's in the backend memory, so I'm just gonna put it in a box. Whatever I keep in box, it's nothing that we write. Okay, after that if I write print X, on the output side it's gonna print X. If I write something else here, it's gonna happen after that. Like, let's say I also write print X plus 1, so it's gonna print 9C7 also. Okay, after that if I haven't written anything like in this particular block, it's gonna come back to the list, shift its X to 86. Now your X is 86, output will be 86 87, come back again 79, X is equal to 79 79 80, and so on, like till 75. The number of outputs that I'm gonna get over here will be 32, because I have write two print statements here. Any doubt in this, guys? Guys, a temporary have you understood this temporary name concept, guys? मैं म्यूट पे तो नहीं हूँ. Okay, thank you Pratna. Okay, now we are gonna code. Okay, so over here my name of my list is marks. So for X in marks, okay, colon, when I press enter here, it already give me some indentation. You can change this indentation by, if you want to change it, or normally conventionally we go for 4 lines. Some people like to go for 8 lines also, 8 spaces also. Okay, apparently you can change that also over here, configure id le. खुलेगा नहीं खुलेगा, ओके हो गई. Over here indentation width you can change, but not recommended. Okay, for X in marks, print X. Let's say I'm not gonna go print X plus 1 also this time. Okay, run module. You can see 96 86 79 82 92 5 26 and so on. Okay, you can write it like this. Now let's say I wanted to I'm gonna do something.
let's say I wanted to find the sum also, sum of the, okay, we'll go for the sum later. Okay, we can do also the same for your fruit. For x in fruit, let me run it again. You can see coconut, mango, guava, because apparently यही बचे हैं, ये बड़े सारे बस हमने ख़राब कर दिए थे. Okay guys, is it clear guys? Yes, sir. Any doubts? Okay, try this thing once. Try using a for loop once on your own. Any doubt? Just ask me if there's any doubt. Guys, try this. ओके, समझ आ गया केशव का वैष्णव? Yes, sir. समझ आ गया बेटा? Yes, sir. कॉन्सेप्ट समझ आ गया? मेन कॉन्सेप्ट समझना है इस केस में. Yes, sir. ओके.
ओके सो सर बार बार वीडियो वॉइस स्टॉक हो रही है। तपन स्टॉक हो रही है क्या मतलब बेटा? स्टॉप हो रही है? Okay guys, so this was basically using a for loop in a list. Okay, you can use it in the same way for your tuple, for your list, and for tuple list, not for the dictionary as per, but your range also. Range we are gonna do, although just for your just so that you can understand it properly. So first, as I said, we are going to discuss the range function once. Okay. Also, let's say I want to write like these fruits. I have these fruits in stock. So for that, I can just write it like this, plus or plus we have, okay, in stock. Sorry, last. Okay, we have coconut in stock, we have mango in stock, and so on. So this is how we can do, and we can use it like a string concatenation. Okay, so it's okay, I guess because I don't remember teaching you guys this thing. So let's say if we have two strings, we can concatenate it like this. If all the data that we have is a string form, string data type. In other case, let's say if I have a numerical here, let's say 5, so for that we need to use commas here. Okay, because 5 is a integer. Okay, something like this, just to control side. Okay, now coming for the range function. So for x in range, let's say I want to print from 0 to 1000. So for that I need to write 001 here, because if I don't add a lower limit, in that case my lower limit is default, like by default is 0. Okay, let me run this one. Sorry, I haven't completed it. Print x, sorry, x. Okay, let's say I want to have a step here also too. Yeah, let's say if I want to have a step here, in that case I need to go for a lower limit also. You can see 998, 996, 994 and so on. Okay, so this is how the range function works. If I want to print from 1 to this thing, 1001, 1000, sorry, in that case I can go like this. It's gonna take a while. In the meantime, I'll just change the step to 10. Okay, so now comes the list comprehension. List comprehension. So sometimes if we are having something like have a for loop or something we want to work on, we don't need to make the list like this, like manually. Sometimes we can just write a small line of code and write a list. For example, let's say num. Okay, I have a list. So for that list
range 1 to 1001 and 10. Okay, so it will create a list by something like this: print num. You can see the list has been printed. Okay, so we can do it like this also. So this is what we call list comprehensions. We can also create a list like okay, let me do two things here. First I'll create a list square हाँ क्यूब कर देते, चलो यहाँ पे क्यूब, तुम लोग सॉरी कर देना, क्यूब, एक एम्प्टी लिस्ट बनाई. Okay, then we are going to run a for loop for that. For x in range, I'm not going to go for a bigger number, 0 to let's say 10 करना तो 11. Q is equal to x raised to power 3 cube dot append cube. Okay, after that print cube. Wait, int object, oh, cube 1. Oh, again here I need to change. You can see over here the list with the cubes have been printed. Okay, how many lines does it took like to make a list? 3, 4 actually. I can do it using a single line also. Cube 2 is equal to x raised to power 3 for x in range 1, 11. If I print cube 2 now, it will give me the same output as the above. काम भी दोनों सेम कर रहे हैं, बस this is called list comprehension. You can see here, over there I use 0 to 11, over here I used 1 to 11. If I go for 0 to 11 here, I'll have the same output. Okay, so this is how we use the list, numeric list, in a comprehension method. Is it clear, guys? So this is what makes a difference when you go for a job interview. Like if you are doing it like that, a person will know, okay, this person has a knowledge, but if you do it like this, the person will know, the interviewer will know that this person has worked on things first, and they obviously they have a better knowledge than the first one. Okay, is it clear, guys? Guys, is it clear? Sir, बार video या कोई पुराना बनेगा. Okay, so you have two tasks right now. First, create a list from for number from 0 to 1000 or 0 to 100. Okay, after that find the sum of those numbers without using the sum function like the one we did yesterday. Okay, पहले ये करो, एक बार एक लिस्ट बनानी है, उस लिस्ट का लाइक लिस्ट बनानी है 1 से 100 तक के नंबर्स की, 1 to 100. ओके, उसके बाद उसका सम ढूंढना है विदाउट यूजिंग द सम फंक्शन. हिंट इसमें ये है कि आपको एपी वाला फॉर्मूला यूज़ करना है जो आपने 10th में पढ़ा था, मतलब अगर सीबीएसई और एनसीईआरटी था तो.
Is it done, guys? Yes. सर एक चेक पता चलना हाँ जी. एक सेकंड, ये क्या किया बेटा? देख होएगा तो ऐसे ही, बट थोड़ा सा कुछ गलती कर दी. आपको जो नम वाली लिस्ट है ना, उसी का सम निकालना था. बट हाँ, लॉजिक सही लगाया है, तो एक बार दोबारा ट्राई करो ठीक से. सर नम वाले लगा है नहीं, जो नम वाला जो लिस्ट है ना, उसका सम निकालना था ना आपने. आपने तो वैसे ही a+n-1d वाला करके किया है. वो चीज़ वैसे नहीं करनी थी, मतलब आपने उस पर्टिकुलर लिस्ट का नाम नंबर निकालना, वो सम निकालना था. अच्छा, ये वाला देखो ऐसे होगा गाइस. लाइक ये वाली लिस्ट थी मेरी, तो सम नम, इफ आई वांट टू डू इट लाइक दिस, तो len num n/2 a+l होता है ना वो, इनटू num, सॉरी, min num plus max num, print sum num. $49600. Okay, so this is how we can find the sum of these numbers. Okay, if I try to like go for print sum
now even that will be the same. Okay, just because यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड है तो ये फ्लोट हो गया है. Okay, so this was done. After that, try this thing using the, like, try to get the output as squares. Okay, not the cubes. करो एक बार try. सर Yes. सर एक बार लेन का मीनिंग बता दीजिए फिर से. लेन का मीनिंग होता है जो भी आपकी लिस्ट होती है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं वो चीज़ चेक करने के लिए. सर, लेन मतलब का जैसे यूजेज. ये प्रोग्राम बना तो इसका मतलब पूरा बता दीजिए. कौन सा वाला, ये जो ऊपर मैंने लिखा है समनम वाला? यस सर. अच्छा, इसका है देखो लेंथ. हमारा जो उसके लिए फॉर्मूला होता था वो कुछ ऐसा होता था. एक सेकेंड. जो ए पी वाला फॉर्मूला होता था वो कुछ ऐसा था. n/2 2a प्लस n-1 d होता था एक तो, और एक n/2 a प्लस l होता था. ठीक है, तो n/2 आ गया मेरा लेंथ बाय 2 से. ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने उसको किससे, मिनिमम नंबर से एंड मैक्सिमम नंबर से. यस सर. ओके, थैंक यू. सर प्लीज़ ये चलने के वेरिफिकेशन नहीं हुआ था. ठीक है, एक बार जल्दी से वो स्क्वायर्स वाला करो. 6 मिनट है तुम्हारे पास.
Is it done, guys? Yes, sir. Okay. Any doubts in this? No, sir. Okay. Let's move forward with this then. Okay. For the comprehension itself, we can also do something like this. Like, let's say I want to change everything that is there in essentials to something else. So, like, and make a new list out of it. Let's say ascend is equal to sorry, le dot upper. Let's say I want to change everything into the uppercase. In that case, in the essentials for le in essentials. Okay, print ESSEN. You can see everything has been changed to uppercase. Okay, so this is how we can work upon with list comprehensions also. Like writing, if we want to do something in the list, we can just create, like, have it in a single line also. We can create a list using a single line. Okay, then second last topic for today is slicing of the list. Now, what is slicing? Let's say I have this list. Okay, I have a list over there actually. Yeah, over here. Like, I will just do one thing. Okay, let's say this is my list and I want to have only these three elements. I want to use only these three elements, or I want to use only these three elements. Okay, based upon my need. Or let's say these, something like this. In that case, we use a term called slicing. Okay, now how the slicing works, let's say I have the list called marks. Okay, so first 5. Okay, like first 5 marks. Sorry, marks, square brackets, 0 colon 6. Wait, 0 1 2 3 0 5. Okay, print first 5. Let me run this one. You can see over here first 5 elements has been printed. Okay, so even if you don't have anything here, like in the place of 0, it will work.
and even if you don't have anything here, in that case the whole list will be printed. So that's how we copy a list. Okay, Control Z. Last 5 is equal to marks. Okay, now last 5, either I should know the list, how the list is working, or -5 to nothing, like 0 I cannot write it here. I have to write -1 in this case if I want to have it. Wait, cancel. You can see last 4 only has been printed, not the last 5 is my marks for a list. Okay, I had the 97 was the last element. So if I want to have the last element, in that case I just need to keep it like this. Okay, 75 elements. In between, if we want to do it, we can do it. We can even give a step here. Okay, let's say 2. You can see only alternate elements has been printed. So step is done, slicing is done. Okay, now a task for you guys. Give me middle 2, like just if the list is even, go for middle, just go for middle 2 in that case. Try doing it. Over here you should use floor division. Okay, like list divided by 2 and floor division कर लेना उसको, ताकि वो हमेशा इंटीजर ही थे आपको.
तुषार इसमें मिडिल 5 वाला कर, सर मिड 5 वाला मतलब बीच के 5 वाला, इफ यू डोंट नो द लेंथ ऑफ द गिवन लिस्ट, तो इसमें लेंथ फ्लोर डिवीजन बाय 2 करके करना होगा, करके देखो। ओके सर। Is it done, guys? ट्राई करो एक बार।
ओके अगर नहीं हो रहा तो एक बार देखो, लेट्स से मिड 5. ओके बिफोर दैट mid low is equal to length of your marks floor division 2, ठीक है, -1. C mid high. Mid is equal to marks mid low, mid high. Okay, let us print print mid. (78, 75) बिकॉज यहाँ पे हमारे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट वाज इन इवन वो इस तरीके से आया. अगर यही ऑड होते तो 3 आते, ठीक है. आई कैन शो इट टू यू. वेट ऑड होते तो 77. हाँ ठीक है, ये भी सॉरी माय बैड, मेरा मैच खराब हुआ तो. ओके इज इट क्लियर नाउ गाइस? Is it clear guys? केशव समझ आ गया केशव बेटा? Yes, sir. Okay. Last thing that we have to do today is tuple. So tuple, when we were discussing about data types and all, we discussed that tuple is something that is unmutable. We cannot change the tuple once it is created. Okay. So I am gonna create a tuple by the name of tup. How do we create a tuple? We just use the normal brackets. Let's say 85, 95, 978, 85, 95. Apparently we can access the elements as simply as we were able to do it inside the in a list, but we cannot use it, or we cannot add it, or we cannot remove anything from the tuple. Tuple index out of 95, sorry, 2 78. Okay, 2. We can just access the element, we cannot change the element. Tuple dot append, if I try, it will not work for me. Like for me, right, it will just not work. It will give me an error saying that it doesn't have any method called append. Okay, tuple dot remove, even then we will not have any output from this. Okay, so we cannot remove anything, we cannot add anything, we can just change it. Okay, we can just check it. Apparently we cannot even do like this. Tup sorry, just a second. Tup 3 18 5. Okay, print tup. Okay, tuple object does not support item assignment. Okay, if I have to use, like if I have to do it, I can do it by changing the whole tuple. Like I can change the whole tuple, that is possible, but I cannot just go through and like go into it and change one tuple at a time. Okay, one tuple element at a time. So either you change the whole, or either you don't change anything. So this is how tuple works.
Okay guys, is it clear बच्चा? What's the meaning of tuple? हाँ जी, Tuple का क्या मतलब है? टपल बेटा लिस्ट की तरह ही होता है, बट हम इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते. इसको हम स्लाइस नहीं कर सकते, इसको हम इसमें हम डेटा आइटरेट कर सकते हैं, डेटा एक्सेस कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट चेंज एनीथिंग इनटू इट. Apparently list is called mutable, whereas the tuple is unmutable. We cannot change it once it is created. Okay, any more doubt guys? Okay, so that's it for the class today guys. We'll be continuing from the same tomorrow, like we'll be continuing with the list tomorrow, sorry, dictionary, my bad. We'll be starting the dictionary tomorrow, so we can like work upon on dictionaries. So be ready for the class, like be present in the class. Okay.